Hello viewers, I am Ansu, your mentor for today's JavaScript fundamentals. Our video will be divided into many subtopics. Obviously, timestamp will be given to you. Without wasting any time, let us set up a basic template. Open Visual Studio Code in any folder. And after opening, just make HTML, CSS and JavaScript file. You can make it by clicking this icon or just by double tapping, or a basic fancy stuff. Make it from terminal. Basic stuff, you must have done this in your previous study jams. Change the title, link the CSS tag, file name, make sure that file name is same, give it a h1 tag, JS tutorial, and link the script. Obviously we will write the script over here and it is linked from here, just like we write our style.css. Okay, let us just give it a style of background, similar to the style as we write the style code over here and link it to the index.html file over here. We will write our script or JS code over here and link it. After the whole body will be written, then we will link it. So over here, just above the body tag finishes. You can also write a script over here, but since this file will go very long, so we don't usually practice this convention. Convention is we write, give it a source of the file name. Here it is script.js. File name can be anything. Now if you have done the previous study jams, you must be knowing the show preview. Just click on show preview, it will show you the page that we just created. If you don't have show preview or live preview, you can install it from the extension. Just search for preview. Okay, the internet, but you can install it. Let us just open it in browser. Okay, so now on your browser, click on this icon and find here DevTools, more tools and DevTools. Depending on your browser, you can find it on your own, or you can find it by clicking anywhere on the window and inspect it. Here you will find many tabs, for example elements, console, sources, memory and all. So we will take a basic look at what these tabs are meant for. For example, elements tab are meant for inspect and edit HTML and CSS in real time. So here we have, just click on this. Here you can change it in real time. For example, and here it will change again, but these are not permanent, it is temporary. Upon refreshing the page, it will again revert to its original state. You can also debug layout issues and modify styles, which is a good thing. And the second tab is console tab. Console tab is used to display JS errors and warnings. So and also you can run JS commands interactively. For example, console.log, and it will work fine. Next tab is sources. Sources are from where these all files came. Say for example, we have made all these files over here, and these files come from the host server. Here in our case, the host is local server. From there it has HTML page, script page, JS page and CSS file. Same code, you must have seen this. And here it is something new which is embedded by VS Code, nothing to worry about. Here you can also see that it is a WebSocket server. So when you change, WebSocket is something like when you change anything, it changes on the fly. For example, I change and it also changes. And the next tab is we have network tab. Network tab tracks all network requests. For example, API calls, images,
and whatnot. For example, you go on facebook.com and you request for a password, anything. It will show how the requests are going. Explore on your own, but network tab is very important. You will use it a lot of times. You can also analyze page load performance on any network. For example, here you can change it to fast 4G or 3G and whatnot. And the next tab we have is performance tab. Performance tab usually give us insights about the page rendering. You can click here and go on this article. How quickly the main content of web page loads and is visible to user. And then we have this memory tab. Memory tab analyze memory usage and detect memory leaks. For example, our JS virtual machine instance uses 3.6 MB. Then we have application tab. Application tab basically gives a storage mechanism. For example, you have here local storage, session storage, cookies. A basic example of local storage you must have seen that if you have not logged into your Amazon or Flipkart account, but still if you can add to cart those products or anything is saved over here only. For example of session storage includes like your login credentials and everything. Tokenized, these are in a key value where there is a token and it has value. While making project you will learn a lot. But and here we have cookies. It also allows to inspect and modify cookies used by site. Then we have security tab. Here you can see SSL certificate and all. Here our project is HTTP, but for example if you go on facebook.com you can see the SSL certificate also. If I can open it. Here. This is the SSL certificate. And the pro tip at the last, explore it on your own. Just go basic Google search and all. Hello guys, welcome again to Study Gems of JavaScript Fundamental course. After completing the overview of DevTools, now we will cover basic syntax and all the fundamentals. I want to let you guys know that if JavaScript is your first language, then many things will sound jarring, but just stick to it and keep learning. Let us start now. What is JavaScript? JavaScript is a high level interpreted language. And here high level, now there comes two keywords, high level and interpreted. What does high level mean? High level means is there's a lot of abstraction to it, like memory management on your machine, stuff like that. Like you would with a low level language such as C or C++, it is more close to computer. The program is executed here, the program is executed directly, okay, without having to run through a compiler, as you would have been doing in C or a language like Java. By the way, Java and JavaScript are both different. Okay, so JavaScript is a language of the browser or the client side programming language. You must be familiar with the client and server architecture. So it is the language of client side programming, meaning code that runs on your client machine. You will need to know JavaScript. So languages like Python, PHP, Java, these are all great language, okay, but they are all server side. Okay, so they run on server. They run some kind of library that actually generates JavaScript for browser if they want to use client side system. You can also build server side and full stack application using Node.js, which uses JavaScript or TypeScript. TypeScript is nothing, it is just a superset
of JavaScript. Okay, no, so here I will cover fundamentals, but implementation like DOM, which is the document object model, things like that. Even some basic form validation, which is the last part, will be done by Anushka ma'am. So first of all, let's start to learn. Okay, so let's start to learn JavaScript. So here I have my text editor on the left side and browser open on the right side. Basic setup was already done. If you are skipping the video, just go backward and you will see the basic setup of how it is being done, like, things like that. Okay, so since setup is done, now let us first talk about debugging. Okay, so here I have a tab open, console tab. It is mainly used for debugging. For example, there is an error. It is shown by console.error, some error, and you will see that there is some error, and you will also see that it is also showing on which line of the program it has error. Or for example, console.warn, it is also showing there is some warning at script.js line number 2. Warning may be tolerated, but error in many cases is not tolerated. Whenever you say error, it has to be resolved as the program will stuck. But these things are less used in actual programming. Console.log is enough for any kind of debugging, or else you will you can write directly log anything. For example, we have an object of something like that, maybe a person from, maybe a query from database or anything else. Okay, I also want to introduce to you guys this MDN web docs. Is a nice resource for developers. So you can see here you can search anything. For example, console, and you get each and every methods of console or attributes. For example, console has a method log, console has a method assert, clear, count reset. Just give time to it. If you even give 5 minutes to it, it will be very good to you. For example, here see warn, outputs a message to the console with a warning log level. And examples are also given. You can copy it here from here and paste, or I encourage to you to write the code rather than copy pasting it. It is a good practice, nothing else. See here, so, we will talk about what this notation is, what is object and else. But see that it is console.log. Log method is used here of console to log the some object. And over here, if you see, there's a log of some object which has id 5 and str some text. With that being said, that was it for console and debugging. Okay, let us clear this out and let us talk about variables in JavaScript. Okay, so what are variables? Variables are used to store data. There are three ways to declare variables: var, latent, and I mean const. So here, var is globally scoped and outdated. We should avoid using it. Let allows reassignment of value. These are all keywords
In fact, all three are keywords to create a variable. For example, where name equals to some name. Okay, you can give this semicolon. It is not necessary, but it is a better practice to use it. You can also leave it. Let name2 equals to another name. And about this representation, it is called camel casing, where everything starts from small lowercase letter, but whenever a new word comes, the first letter of the new word is capital. This is called camel casing. It is a convention to use. You may or may not use. It's up to you, but it is a convention so that code readability is preferred more. So we were talking about this variables declaration. You can declare variable like this using where, let, or const. Okay. All three are creating a variable named, for example, where creates a variable named name, which gives a reference to this some name string. We will talk about what is a string and all, but here let's see, just see that it where keyword is used to create a name, let keyword is used to create name2, const keyword is used to create name3. So what is the difference between all three? Why we are using where, let, and const? Where is actually outdated. We are avoiding using it. Where is globally scoped? I have told you that it is globally scoped, but what does globally scoped mean? For example, you have a if statement or a block of code. If you create a variable with where keyword, then it becomes tedious, or you say it becomes problematic to use the very same variable name. For example, if you have used I over here and in a block of code below, if you are using I, then it will reference to the same variable. That is, I is globally scoped. So that's it. It is not used, but you should know. Now, what about let and const? So let and const has a basic bifurcation of that of reassignment. Let can be reassigned, but const can't be reassigned. I mean the variable created with let keyword and const keyword. Let keyword lets you reassign the value. For example, I will console.log name2 or let const make it age of 21. Okay. Again console.log name2, and in between let us just reassign name2. Name2 equals to hack. Okay. And if you are saying that script.js line number 8 shows us another name as expected, another name, but line number 9 reassigns the value of name2. So the now name2 refers to hack, and on line number 10 here over here again shows us hack. That means value is reassigned. But if you try to do the same thing with age, it gives us 21. Let us reassign to age of 20. Reverse aging. Say, oh, age. Now you must be seeing that here it is an error as we have talked the red thing.
on on script.js line number 13. It gives giving an error assignment to constant variable at script.js 13 fifth column. So it const keyword doesn't allow us to reassign the value. That's it. So now coming to data types in JavaScript. Data type describe the different types or kinds of data. Okay, so for example, here we have taken example of name with string, age of type number. These are what? These are types or kinds of data that the age variable is referencing to. So now data types is divided into two parts: primitive and non-primitive. Oh, yeah. So now primitive includes data types like string, numbers, booleans. I will give example of all of it. So and undefined. Okay, and non-primitive includes arrays, objects. Means non-primitive are more of a complex data types. Now let us take an example of const name equals to hack, const age equals to 21, const is bool equals to true. See here you must be seeing that name declared by a const keyword is referencing to hack which is a string. Now string can be declared with a single quote also, no issue with that, but it is a string, age referencing to a number, is cool referencing to a variable that is boolean. It can be false also, but just say hack is cool, or any equals to null, not no, left side is just any variable name, you can give it on your own. Okay, now there is a very famous method which you should use most often, type of. This is type of method is used to check the data type of variable. For example, if we clg, I mean log it to the console, type of, for example, age. See here it is showing it is of type number. Same goes for is cool. It is of type boolean. For primitive data types, just write the code and explore on your own. Basic search for method on Google search it, anything. Now let us talk about a simple, simple not, but mainly a complex data types, which are non-primitive data types, arrays and objects. And we will also talk strings first. What are strings? Strings are a sequence of one or more characters that may consist of, for example, letters, numbers, or symbols. Let us say I've been as declaring it previously also. Name equals to a. As earlier told, it can be declared with single quote or
double quote, anything. Let us just say name is hack or done previously. You can log it and whatnot. I mean name, okay. Now string comes with many methods to it. For example, uppercase, lowercase. If you see it, name dot to uppercase converts all alphanumeric characters in a string to uppercase. Just hover over it and it will show you. And see the output hack, all converted into uppercase. And then we have a similar method, name, you must have guessed, name dot to lowercase, converts all alphanumeric characters to string to lowercase. See, all into lower. Earlier it was lower, but let us say we have changed it. Then also it is converting to all lower. And there's one method, uh, substring. Substring takes two argument, or generally said parameters. Let us give it from 1 to 2. I'm doing a typo with substring. See what happens is name is a string and string is stored as an array of characters. So when we will talk about array, it will be much more clear. In array, the first index is zero indexed based system is used in a every programming language generally. So first, I mean zeroth index is H, one index is A, two index is C, third index is K, and here two is exclusive and one is inclusive. Means the last one is exclusive, first one is inclusive. So it starts with 0 1, I mean A, and ends with A only. So the output over here is A. If we make 2 a 3, then see third is exclusive. So 0 1 2 3, I mean K is exclusive and starting from 1, A C is our output. So explore methods. You must be knowing to Google search string methods and from any of them. You can go to MDN web docs, but all of them are pretty good. W3 schools or Geeks for Geeks. Let us go to MDN web docs. See, there are many methods. There is method char at position of 1. So let us say if we implement the same method at name dot char at 0th index, it will give H, 2th index, it will give C, and so on. And then there's this comparison. Go through it. It will be good for you only. And then we can also embed variables in a string, which is called template literals using backticks. If you use backticks, for example, someone's name with profession, start with backticks. And for example, hack is a programmer of age, and we have a variable named age over here.
Okay, but if we write it normally with double quotes, it will give an output of like is a programmer of age as an in string, but we want age as 22. So using backticks, here we are using backticks. You can use dollar and then curly braces, and inside it, if you give any variable, it will take as an variable, not as an string. So now if we log it, log name with profession, hack is a programmer of 22. Earlier it would give hack is a programmer of age, not 22. Write something like that and explore on your own. Do Google search or whatever. So next data type we have declaring a variable name and assigning a one variable referencing to one thing. But arrays are storing multiple values in a single variable. Okay, so see, we have a cars variable name with no, if we were declaring it directly, for example a car Tata, it is storing single value, but using arrays which has a syntax like a square bracket with values inside it. For example, we have a car name, another car name, and yet another car name. See what happens here is we have declared three variables: Murcielago, BMW, and Tata, all three with one variable name, cars. Now, how to access it? It goes like cars with square bracket just in front of it and index of the value. Index, you must be familiar with that since the programming is using zero based index, so it starts with 0 points to this and 1 points to this, 2 points to this. Okay. See, and if we only log the cars, then it will log the whole array, which has a on zeros index, Murcielago 1th index, BMW 2th index, Tata. Now there are multiple methods of arrays. So we will talk a few. For example, cars dot. No, say these are the methods which our editor is suggesting us. For example, saved, slice, some sort, unsaved, pop. Let us take an example of pop. What does pop does? It removes the last element from an array. See here it is written. If the array is empty, undefined is returned and the array is not modified. Okay. See, there's a interesting line. Array is not modified. Let us say cars.pop and print the cars. And this pop method also returns something. Let us just see this also. Last.pop returns what? Data pop that is removed from the last. It in the cars array, it goes at the last, finds data, it removes it and logs it. Now the cars array doesn't have data in it. It has only two car, and you can see it over here. Only two of them is visible. Now something interesting, than other language.
Arrays can hold multiple data types also. For example, that's a bad variable name, but let us see. No, these are data types of type numbers, but you can just insert. Oh, oops. See, there is a variable of, there is a data type of type string and number also, and same, it can also be accessed. See, it is being accessed. That's it for arrays. If you want to learn more, feel free to search for it. Array in JavaScript. Go to any of the link. All of them are pretty good. Okay, so now let us talk about what objects. Very important. What are objects? Objects is used to store key value pairs. For example, one thing is related to another thing, then objects are more primarily used. Let us directly jump into example. Const person equals to name, let us say. Now this is the syntax of it. Uh, Same, a keyword to declare a variable name, assignment operator, and curly bracket, and inside it it has key value. And how key value is given? Name colon whatever you can give. For example, Adam. Now with comma separated, you can give multiple key value pairs. Age, for example, 22. And in object, you can also give another object also. For example, mm, address, giving another object, address with street, basic ground, let's say. And same here also, it is comma separated with let us give it another. That's it for declaration. Now let us see about how to access objects and its attributes. Then we will talk about destructuring and all. How objects are accessed. Let us log it. Person. It is accessed by dot operator. Person dot, and use control space to see what are the attributes it has. For example, it has age, name, and address. If we say person dot name, it is saying Adam. A bit similar to arrays, but there we are using square bracket. Here we are using dot operator to get the attributes of it. Key of it. Like here, keys are name, age, and address. Now, address itself has another object as value, which has key as street, value as DSA ground, and yet another key value pair is city and city value Punya. Okay. Uh, or let us say we want name as a variable, then you can use destructuring property of it. For example, const name equals to person. See, it is doing the same thing.
This thing is called destructuring. Now you can also destructure and nested object. For example, we are here destructuring address. We want city. We want city inside address. Then this is the syntax: curly bracket inside address, and then again city. Then it will give you name of the city. See, these are syntax. You will get used to it, but this is the way. This property is called destructuring. Okay, and I encourage you highly again to search and explore on your own objects in JavaScript. Go through any of it. You will find better yourself. Loops. Loops are tool that is used to repeat a set of instruction. Okay. Now set of instruction can be anything from data querying to adding some name and then again returning the response or whatever, or simply logging a value of I. Let us directly taking example of uh, a keyword, or okay, let us just check an example of this is the example of for loop. Now loop can be also declared using many keywords. For example, for loop, then there is while loop, for each, and here what makes JavaScript special is that it has many array methods which can be used directly as kind of a loop. For example, for each, map, and filter. We will use or give you an example if not, if time permits, but let us see for now for loop. Here let us just log the value of I. See what happens over here, that I is first initiated with value of 0, starts with I equals to 0. Then the second thing gives us a boolean variable if I is less than equal to 10 or not. In our case, here I starts with 0, so 0 is less than 10. That means it returns a value of true. Then it will go inside the loop and it will print 0. Then it will reach to this block which gives the order to increase the value of I by 1. I plus plus means increase the value of I by 1. So now I became 0 plus 1, that is equals to 1. Now then again it will check if 1 is less than 10, it will again return 1. That is 1 is say analogous to true, and 0 is analogous to false. Or let us just say 1 is less than equals to 10, will return true. Then it will again go inside the loop. It will print 1. Similarly, till 10 it will print, and when I will become 10 plus 1, that is 11, and it will check that this is not less than 10. It will return false. It will not go inside the loop, and it will return after line number 70. It will return from the loop. Similarly, there is while loop. While generally just take condition, and while loop runs as long as condition is true. Here it will go inside infinite loop. Or let us just which is not a good practice. We'll see normal example of 2 is less than 4. Yes. Now again here it will again go in infinite loop since 2 is less than 4 every time. So it will print yes, 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 yes again and again. You must be seeing the page is refreshing.
That means it's gone. Okay, so that's it. And there are many methods of array. We'll take an example of one high order array methods. Let us take an example of map. We'll take an example of this cars array. Let us uncomment it. Cars.map. It accepts a callback function. Now we will talk about callback function or function later on. But let us just, for now, assume that this is syntax of it. It is syntax of basically it is syntax of a function which can take argument or parameter over here and a block of code to be executed over here. For example, for now we will just log the value of whatever it is coming from each and every iteration of on the cars array cars.map. So let us so for each car it will log the value of car. It will map on the cars array. So first car, second car, third car. So here first car is car and it will log the value of car. Or similarly, there is a method filter which filters based on if the condition is met or not. Explore on your own, just go onto Google and search for filter method of on array. Okay, now let us talk about conditionals. Very important topic. Now conditionals is also divided into many parts. I mean, it's not divided. You can use different types of it based on your requirement. For example, there is if else, then we have mm, switch, we have ternary. I will give you an example of all, but you can use based on your requirement. Okay, let us just directly take an example of if else. Let num equals to 5, for example. If, or let us take an example of a directly question where it validates the age equals to 22. If age is greater than 18, run this block of code. I mean, it will here it checks the condition, which means it will return true or false based on the variable. So here we have age variable, which will check if it is greater than 18. If it is greater than 18, it will return true. So the code block inside it will be executed. Okay, you must be saying since it is greater than 18, the code block inside it is executed. And similarly, we have else. Now, if we change the age to 12, and then we have run the code, it checks if age is greater than 18.
it will return false since 12 is not greater than 18. So this block of code is not executed. What is executed? Else is executed. Explore on your own about else if. Else if gives an intermediate solution for another check. You can insert over here. So now here it will check. Now first here it will check if age is greater than 18. If it is false, then only it will go below it. If then again it will check if age is, let us just say, greater than 12. See first what happens, it checks age greater than 18. No. Then it will check is age greater than 12. Here again it will return false. So else block will be executed. Else was just an intermediate solution, nothing else. Then we have ternary operator. Ternary operator are nothing else. It is a shorthand for if else. For example, if you have, basically, let's say we have num equals 4 and let the result equals to num modulo 2. I will talk about the syntax of it in a few seconds, but this is it. See what happens over here. Num 4 is assigned to num, and this is ternary operator. From here to here, you can differentiate it between three parts. First one from here to here. Let us just give it in a bracket from here to here again. So the actual syntax is not in bracket. I am making this to make you understand. For example, here first one is condition to be checked. If num modulo 2, okay, if you haven't, if you don't know what is modulo operator, it just gives you a reminder when num is divided by 2. That means it will be even or not. If it's divided by 2, then it is even. If it's not, then it is odd. So what happens is check the condition, again returns true or false, same as if else. So it is just basically a shorthand. It returns true or false. If it's true, the first thing will be executed. If it's false, then second thing will be executed. It is separated by question mark and colon. That's it for ternary operator. And then we have switch case. There's nothing much. This is used when we have nested if else. Means if else else if else if. Here just use the key value, and it will means you can use another case again and again and again, just like you would use age greater than 12, age greater than 15, age greater than 16. You can use directly over here case, age greater than this, age greater than, then again case case, and finally the default will be, if nothing is executed, then default is executed. Study about switch case I haven't told much. Okay, so now let us take an example of callback function. What is callback function? Okay, first I will take an example, and I will tell you what is callback function and all. Here we are declaring just a function
Set timeout is a inbuilt method which again accepts a callback function. And here we are assigning some data. Now in real life we will be querying some data from any database, for example SQL or non-SQL, that's another matter. But in real life we will be querying some data in real life, which will require some time. For example, here we are uh, making an alternative to wait so that it mimics the actual real life scenario of getting data from a database. Here, for example, it will take 1 second to get the data from the database, and we will again call back with by giving data in it. And we'll call the fetch data with a callback of data in it in CLG. Data received. Okay, so what happens over here is fetch data is a method. We are making a function which accepts a callback, which will be a function, and it after 1 second, it will assign data, some data into data variable, and then again call back the method. For example, here data, and after 1 second, it will, for example, here after 1 second, data is receiving, which is actually it mimics the real life scenario of querying data from a DB, which requires time not in second but generally in millisecond based on internet speed. Now, if there will be many methods, so now the problem with callback function is that there's a term called callback hell, which when nested again and again. For example, we will nest if we nest another callback function, it becomes a hell to manage the function, and the code readability is very minimal. So there comes another thing, promises. So what is promise? Promise, real life, in real life also, what is promise? That I will do the work for you. I will do something, I will do. No. Declaration that one will do or refrain from doing something specified. I will do the work. It is something like that. No, let me give me time to write the code again here. Okay. So as told earlier, promises are used to handle asynchronous operation. They represent a value that may be available now, in the future, or never. May or may not be available. See, what happens is here again fetch data is a function which returns a promise. It has resolve or reject. Resolve means it may happen, it happened. Uh, if we return resolve, it means it has happened. If we return reject, it hasn't happened. Simple. The promise is fulfilled or promise is rejected. Now, for example, here we have taken a timeout function, which is a mimic. Obviously, I've told you it is a mimic of um, that we have made a database call which takes 1 second exactly. See, okay. And then we have data equal here, data
If data is there, then we will resolve, else we will reject. Yeah. Okay. Then here we have called the fetch data function, uh, and dot then if you hover over then you will see on fulfilled the callback to execute when the promise is resolved. Okay, here it will get data. See, after 1 second, data received some data, means that the promise is resolved. I will refresh it again. See what happened. It has gone in here. Line number 161 executes fetch data, which returns a promise that I will do the work before even the time hasn't finished. That 1 second hasn't reached its and hasn't terminated, but it gives you a promise. Okay, that I will do the work, and then after the fetch data is completed, dot then it sees after resolve, means if fulfilled, then it logs the data, and catch is finally executed if there is any error. Okay, basically asynchronous operation is handled over here. Now there's something similar and a cleaner way to understand this, that is async and await. More cleaner, generally like promise only, but it is more cleaner. Again writing the code here function. No, don't get amused by this try and catch block. Try and catch block is nothing. Just it will try first this. If it goes out with an error, then only it will go inside the catch block. Just like we have done it. If dot then is successful, then it will terminate the code. Else, if it got an error, fetch data or something, then it will go inside the catch block. Same over here, goes inside the catch block only when try block is failed. Now here comes the try block. Nothing, just const data equals no. No, this is the keyword await, async and await. Await means wait here. Okay, wait till fetch data is completed. It works. Now to use await, you need to declare the function as async. Nothing else. Async was nothing much. To use await, you need to declare a function with async keyword. Else you can't use. Await has its importance that it will wait the function call. Means when the till the function or fetch data is resolved, is completed. For example, here same example. After 1 second, it completes. It resolves. Okay. After 1 second, it resolves. So this this line number 173 will wait for 1 second till we have some way till fetch data function is executed properly. I mean it resolved completely. And after that this line or line number 174 will be executed. Nothing, just give it a log, data received. Call the function.
Let us refresh the page. See, same thing happening. After 1 second, it again goes to the same thing. Okay, now giving us it a summary. Let us give a summary of callback promises and async await. Callback is simple, very simple, but can lead to callback hell when nested. When nested callbacks are there, callbacks inside callback, this term is called callback hell, and the readability has a vast issue. And second thing is promises, better for chaining asynchronous operation. Means you can chain asynchronous operation again and again and again. Means it makes another block of code, so it becomes chaining, it becomes possible. Now async await, as told, cleaner and easier to read. See, here you are reading that await the operation of fetch data. Means till fetch data is completed, till then wait, just wait on this line only. After that execute 174 line. Async await is generally most commonly used, and it is for complex asynchronous logic. That's it from my side. Hello students, myself Anushka Kai and I'm the member of Hackslash Club Web Team 405 Found. So today in this YouTube lecture, I'll be continuing your next JavaScript topic, that is document object model DOM. So let's start with it. Now, what is DOM? The DOM means document object model. It is a programming interface for web documents. It represents the structure of HTML or XML document as a tree of objects, allowing developers to manipulate content, structures, and styles dynamically. So basically, it gives us the access to manipulate the content. The content means the tag you have written, then the content you have written inside the tag, uh, then your every aspect of HTML program, and it consider your HTML program as a tree, and tree has its objects, and these objects can be your element, text, and attribute, values, anything. So, yeah, so in DOM, there are different nodes. Let's start with the first node, that is the document node. So basically, this entire tree structure represents an HTML document, and this entire document is basically the document node. Then there is a element nodes. Element nodes like the tags you are writing in your HTML programs, like you are starting your HTML program with this HTML tag. Then there is a body tag and there is a head tag. So after that, you're you're writing your HTML program with the title tag. Then there are many more tags like anchor tag, heading tag, text, uh, uh, text, that is the content inside the these elements, anchor and heading. Uh, these are basically nothing but the tags of the HTML programming, and this we can call as as our element nodes. Then there is the attribute nodes. Basically, at the time of declaration of a division, we use this class or ID. So now, what are the classes? Class and ID. ID is a unique identifier for an element. Each element can only have one ID, and no two elements should have the same ID in a valid HTML document. It is useful for selecting a single document. Suppose we are writing this heading tag, and you want to write some text like hello world inside the tag, and you want to give it ID as a title. And now, after that, in your CSS file, you can do the styling and the JavaScript manipulation by accessing the ID, by simply accessing the ID. So now, then class is attribute can be used on multiple elements. See, there is a difference between class and ID. ID is a unique identifier for an element, and class attribute can be used on multiple elements. It's like it allows grouping multiple elements for styling and JavaScript interactions.
Like you want to style the multiple elements, you can use the class. But if you want, but I for ID, it is a unique identifier for a single element. So we will be not repeating the same ID for another tags also. But talking about class attribute can be used on a multiple elements. It will allow you the grouping of multiple elements, and it will be easy for you to styling and also JavaScript injection. An element basically can have multiple classes. Okay, and the last node is text node. Uh, what comes under? And so basically, the last node is the text node, which represent text content inside elements. So basically, if you are writing paragraph tag and you are writing some content in the tag, so whatever content you are writing, that content will represent that can be any text or something else. So basically, the content inside your that tag is your text node. So basically, these are the one, two, three, four nodes of in the DOM. तो now our next topic is DOM methods. अब DOM methods में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी और मेथड के बारे में. So basically प्रॉपर्टी क्या होती है? What are the properties? Properties are values associated with an object. They are like variables that belong to an object. Now you have gone through object. What is object and how to write object and everything in JavaScript already in the same video. तो एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, एक नई फाइल. उसका नाम लिख दूँगी मैं प्रॉपर्टीज़ डॉट जेएस. ठीक है. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं. ऑब्जेक्ट तो बेसिकली हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में. कांस्टेंट पहले एक काम कर लेते हैं. बॉयलर प्लेट वाला प्रोग्राम हम लिख ही लेते हैं. तो इसके लिए मैं शिफ्ट 1 दबाऊंगी. सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ न्यू, जिसको मैं प्रॉपर्टीज डॉट एच टी एम एल सेव करती हूँ. अगर आपने एच टी एम एल के सारे एक्सटेंशंस जो है वो डाउनलोड किए होंगे तो आपको यहाँ पे शिफ्ट 1 दबाऊंगी मैं तो आपको एक बॉयलर प्लेट वाला प्रोग्राम भी मिल जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगी. अब मैं बताऊंगी कि बेसिकली मैं बोलना क्या चाहती हूँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो पहले सपोज हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. सपोज उस ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास स्टूडेंट है. तो मैं क्या करूँगी कांस्टेंट स्टूडेंट. सपोज मेरे ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट है. ओके. उसके बाद अब मैं कुछ वेरिएबल्स लूँगी. अब एक स्टूडेंट होता है उसके पास क्या हो सकती है, उसका खुद का नाम हो सकता है, एज हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है. So basically, whatever variable I'm taking for my students, we can call this and we can assume these that they are our properties. बेसिकली मैं अब ले रही हूँ स्टूडेंट का नेम, एज, कॉलेज. तो ये सो जो भी मैं उस स्टूडेंट के बारे में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर कर रही हूँ वही हमारी प्रॉपर्टीज होगी. तो मैं लिख लेती हूँ सपोज नेम. दिस इज हाउ वी राइट द ऑब्जेक्ट इन जेएस, राइट. नेम इक्वल टू सपोज मैंने लिख दिया अनुष्का. यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं. उसके बाद मैंने एज लिख दिया और कॉलेज लिख दिया. एज
21 लिख दी। और कॉलेज लिख दिया NITP। ठीक है, तो ये जो मैंने सारी जो वैल्यूज़ डिक्लेयर की है, नेम, एज, कॉलेज, उनकी भी कुछ वैल्यूज़ है, दैट इज़ माई अनुष्का 21 और NITP। दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज़। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है तो यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर्स भी आ सकते हैं। और सपोज अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाती हूँ? कंसोल डॉट लॉग, राइट, कंसोल डॉट लॉग, इसमें स्टूडेंट डॉट नेम। नाउ मेरा ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो स्टूडेंट है, तो किस ऑब्जेक्ट से मुझे प्रिंट करवाना है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ है उनके प्रिंट करवानी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रिंट करवानी? व्हाट प्रॉपर्टीज़ आई वांट टू प्रिंट? सपोज आई वांट टू प्रिंट नेम, तो मैं डॉट नेम करूँगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद सपोज मुझे एक और प्रॉपर्टी प्रिंट करवानी, अगेन कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम हो गया। सपोज आई वांट टू प्रिंट स्टूडेंट का एज। ओके, हाउ आई विल राइट स्टूडेंट का एज? स्टूडेंट एज। ठीक है, सॉरी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट्स भी लिख देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मेरे को आउटपुट जो मिलेगा, द आउटपुट दैट आई विल गेट फ्रॉम दिस इज 21 एंड अब मुझे मिलेगा डॉट नेम। नेम क्या है मेरा? अनुष्का। मैंने वैल्यू क्या दी उसको? असाइन किया अनुष्का। तो ये दोनों आउटपुट मुझे मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे मॉडिफाई करना है। सपोज मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट की एज 21 नहीं भाई 22 थी, तो मैं अपडेट करना चाहती हूँ अपना ऑब्जेक्ट। मैंने ऑलरेडी वैल्यू उसकी डिक्लेयर की थी 21, पर अब मुझे उसका एज जो है वो अपडेट करना है। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगी कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट का कौन सी प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो और उसकी मैं वैल्यू उसको असाइन कर दूंगी ये। अब मैं जाऊंगी प्रिंट करवाने कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट करवाना है मुझे? स्टूडेंट की एज, राइट, स्टूडेंट डॉट एज। स्टूडेंट की एज मुझे प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अब जो है मुझे आउटपुट, अब मैंने चेंज कर दिया, राइट, अब मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा 22। ओके, सो आई विल से हियर ओपन विद लाइव सर्वर, और ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगी, कंसोल में चलते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी मुझे आ रही है अनुष्का, उसके बाद सेकंड आ रही है मुझे एज। जो मैंने प्रिंट करा था वो एज था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया था? एज को मॉडिफाई कर दिया था, तो इसके बाद मुझे 22 दिखाई दे रहा है अपनी। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को अपडेट करने के लिए मैं सिंपली क्या कर दे रही हूँ, अपनी स्टूडेंट, अपना ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद एज का जो प्रॉपर्टी मुझे चेंज करवानी है उसको मैं लिख रही हूँ, और यहाँ पे इज इक्वल टू 22, और उसको ही प्रिंट करवा रही हूँ, तो मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है। सो बेसिकली ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब
मैंने डोम के बारे में भी यही कहा था कि डोम बेसिकली होता किस चीज़ के लिए, कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन मैनिपुलेट द कंटेंट यू हैव राइटिंग इनसाइड योर एचटीएमएल प्रोग्राम और जावास्क्रिप्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो बस यही सिंपली तुम्हें चीज़ें करनी है डोम में, कि तुम्हें क्या करना है कि तुम चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ डोम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये होती कंसेप्ट मेरी प्रॉपर्टी की, कि मैं प्रॉपर्टीज़ को कैसे हैंडल कर पा रही हूँ, ठीक है। मेथड क्या होती है? अ मेथड इज एन एक्शन यू कैन डू लाइक एडिंग और डिलीटिंग एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो मैं मेथड में क्या कर सकती हूँ? मेथड बेसिकली कुछ नहीं, मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रही हूँ। अब अगर मैं किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रही हूँ तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर किसी में मेथड को भी लिख रही हूँ तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मेथड क्या है? बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं क्लास के अंदर सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रही हूँ। अब मेथड्स क्या होती है? अ मेथड इज एन एक्शन यू कैन डू लाइक ऐड और डिलीटिंग एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो मैंने बेसिकली क्या कहा था कि डोम में तुम एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये भी बात वही है कि तुम अगर डोम के अंदर तुम किसी टैग को, ठीक है, अब मैंने डोम क्या बताया था कि एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके खुद के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए वी यूज अ डोम। और डोम क्या यूज करता है? जावास्क्रिप्ट यूज करता है उसको एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो अब मुझे अगर सच में चेंज करना है तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट करूँ कैसे? मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मेथड में कुछ मेथड्स होती है, डोम मेथड्स होती है, कि जिसके हेल्प से यू कैन एक्सेस दोज एलिमेंट एंड यू कैन चेंज, और यू कैन ऐड, डिलीट, यू कैन चेंज द स्टाइल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट। तो बेसिकली होती क्या है ये मेथड्स? तो 3 मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखी है, जो कि होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था आईडी क्लास में क्या डिफरेंस होता है, और टैग क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है, एचटीएमएल टैग बेसिकली। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आपने जो अपने एचटीएमएल प्रोग्राम्स में लिखे हुए हैं वो आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जो है वो सिंटैक्स है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप उसको विद द हेल्प ऑफ आईडी एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस दोज एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ आईडी, देन यू कैन यूज दिस मेथड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इफ यू वांट टू एक्सेस दैट पार्ट with the help of its tag name, then you can access it with the help of document.getElements by tag name, and you have to mark your tag name. You have to write your tag name at there. Document.getElements by class name. Class name, suppose whatever class name you have provided, class name basically हम जब provide करते हैं जब हमें multiple groups को we have to provide the same styling or anything, तब हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। आईडी क्या होती है? आईडी किसी भी चीज को सिंगली प्रोवाइड करते हैं। आईडी किसी एक वेरिएबल के, एक भी डिवीजन की सिमिलर नहीं होती, वो एक ही होती है, ओके। आईडी इज डिफरेंट, इन क्लास इज डिफरेंट, क्लास इज फॉर द ग्रुप एंड आईडी इज फॉर द सिंगल टैग, ठीक है। तो आईडी हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब हमें किसी एक पे ऑपरेशन करना हो, और इन तीनों में से जो प्रिफर्ड मेथड है वो बेसिकली आईडी ही है, क्योंकि आईडी क्या होती है कि सबकी अलग अलग होती है। अगर हम टैग नेम को देखेंगे, अगर हम क्लास नेम को देखेंगे, तो टैग जो तुम यूज कर रहे हो, सपोज तुम एक पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो, पैराग्राफ टैग तुम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो। तो तुम अगर किसी मतलब उस टैग के, किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर तुम अगर जो भी है वो चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, जो भी कंटेंट चेंज करना चाहते हो, अगर तुम यू आर एक्सेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ टैग नेम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यू हैव यूज द सेम टैग, तो बेसिकली उन सब टैग का कंटेंट चेंज हो जाएगा। बात अलग है कि तुम अगर किसी टैग को एक आईडी दे रहे हो तो वो बात अलग है, देन यू हैव टू मेंशन दैट आईडी। तो जिस आईडी का तुमने मेंशन किया है बस उसी टैग का कंटेंट चेंज होगा। तो ये सबसे बेहतर है कि इफ यू आर यूजिंग अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, दिस इज मोर प्रिफरेबल over these both the methods, that is document that get elements by tag name and document dot get elements by class name.
सो ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड। और क्लास नेम भी वैसे ही है, बिकॉज क्लास नेम आप किसी ग्रुप को प्रोवाइड करते हो क्लास, राइट? तो पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू ऐड द स्टाइलिंग ओनली टू अ सिंगल एलिमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर सकते हो। नाउ हाउ टू एक्सेस एंड हाउ टू यूज दिस मेथड, राइट? ये मैं आपको अब सिखाऊंगी। तो चलते हैं वीएस कोड में। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं, कुछ उसको कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम प्रिफरेबल होगा कि हम किसी आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस मेथड का यूज़ करें। उसके बाद हम HTML की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी प्रॉपर्टी के साथ मैं इस प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इन दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना होगा। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आती है एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल। तो हम एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई न्यू कंटेंट लिखना हो, या फिर कोई कंटेंट लिखा हो, उस कंटेंट को हमें इस कंटेंट के साथ रिप्लेस करना हो, तब हम एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। whenever we want to change the content or whenever we want to add the new content inside the tag, we will use element.innerhtml property। डिस्क्रिप्शन क्या देता है कि चेंज करता है इनर एचटीएमएल ऑफ एन एलिमेंट। इनर एचटीएमएल ऑफ एन एलिमेंट मतलब क्या? सपोज तुमने पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, तो तुम्हें पैराग्राफ टैग में तुमने कुछ तो भी लिख दिया है और तुम्हें उसको ही चेंज करना है, तो तुम कैसे चेंज करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलो वीएस कोड पे चलते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और मैं एक न्यू लिखूंगी। अब सपोज मैंने एक डिवीजन क्रिएट कर ली भाई, ठीक है? उस डिवीजन के अंदर अब मैं लिखूंगी अपने पैराग्राफ टैग को। और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ दिस इज अनुष्का। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। और इस पैराग्राफ टैग को मैंने एक आईडी दे दी, हेड नाम की। सपोज कुछ भी दे सकते हो तुम आईडी, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें यही देनी है। और मैंने एक दूसरा पैराग्राफ टैग बना, उसमें मैंने लिख दिया सपोज फ्रॉम नेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये लिख दिया मैंने। और इस वाले पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दी अपनी हेड टू। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे चेंज करना है। मेरे जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है मैंने, उसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, या मुझे चेंज करना है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं, इसके स्क्रिप्ट के बाहर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं। और मैं अब स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगी कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरी, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद आपको क्लोज ब्रैकेट्स में जो आईडी आपको मेंशन करनी है वो लिखनी, जिसमें आपको चेंज करना है उसकी जो आईडी है वो आपको मेंशन करनी है, और डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी हमें लगा देनी है। तो सपोज अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे मुझे आ चुका है सजेशन। आपने अगर एक्सटेंशंस डाउनलोड किए होंगे तो आपको भी आ जाएंगे। और मैंने उसकी आईडी क्या रखी? हेड टू इक्वल टू डॉट इनर एचटीएमएल। देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई मुझे, एचटीएमएल इक्वल टू। अब मुझे क्या चेंज करना है? मुझे इस बात को हेलो वर्ड में चेंज करना है सपोज, ठीक है? ये हो गया। अब मैं चेंज करती हूँ, अब मैं इसको चेंज कर दूंगी। और
इसको मैंने ऑलरेडी खोल रखा था लाइव सर्वर के साथ, तो यहाँ पे मैं फिर से कंसोल में जाऊंगी। तो पहले ये लिख के आ रहा था दिस इज अनुष्का, तो दूसरी बार ये क्या लिख के आना चाहिए था, फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। पर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन किया है, दैट इज अवर हेड टू डॉट इनर एचटीएमएल। डॉट इनर एचटीएमएल मैंने क्यों लगाया है, इफ यू वांट टू चेंज द थिंग्स इनसाइड योर एचटीएमएल टैग्स, यू इनसाइड योर एचटीएमएल प्रोग्राम, तो तुम्हें इनर एचटीएमएल को तुम्हें चेंज करना है, सो यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट मुझे लिखना था उसके अंदर वो कंटेंट मैंने लिखा है। मुझे सपोज हेलो वर्ड वहाँ पे प्रिंट करना था, तो मैंने हेलो वर्ड लिख दिया है। तो इसीलिए अब इस वाले जगह पे दिस इज अनुष्का के बाद हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, ना कि फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो यही होता है बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज, कि तुम कंटेंट को चेंज कर सकते हो। और काफी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, काफी आसान भी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी है एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, और एक और प्रॉपर्टी है दैट इज अवर एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। तो ये वाली हम कब यूज करते हैं, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। हम एक्चुअली इसको यूज करते हैं सीएसएस स्टाइलिंग के टाइम। किसी एलिमेंट का हमें स्टाइल चेंज करना हो तो हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। हमें स्टाइल के बाद जो प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी जो लिखी है ना, उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि तुम्हें कौन सी स्टाइल बेसिकली चेंज करनी होती है। और एट्रीब्यूट वाले में क्या करता है कि चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल, ये एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज कर सकता है एचटीएमएल के। और प्रॉपर्टी क्या, स्टाइलिंग वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये चेंज द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, ये एचटीएमएल एलिमेंट की स्टाइल चेंज करती है। इधर एचटीएमएल हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कंटेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, जिसको हम यूज कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द कंटेंट एंड एवरीथिंग। ये जो प्रॉपर्टी एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इक्वल टू न्यू स्टाइल, ये बेसिकली एचटीएमएल एलिमेंट की स्टाइल चेंज करने के लिए यूज होती है। वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। सो इसको हम कैसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं वीएस कोड में एक बार। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ये ऐसे ही रहने देती हूँ, ये वाला कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहने देते हैं, हेड टू। इसमें मैं अब ये मैंने क्या लिखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी लिख दी है मैंने। यहाँ पर ये यहाँ तक इतना ही थे था। अब इनर एचटीएमएल को हम मिटा देंगे और डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि मुझे कौन सी उसमें स्टाइलिंग वाली प्रॉपर्टी को चेंज करवाना है। उस प्रॉपर्टी का आपको बेसिकली नाम लिखना होगा। तो सपोज मुझे कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है इसमें ब्लू में, आपको भी ये डबल कोट में ही लिखना होगा, ब्लू भी बेसिकली। ठीक है, कलर है इसलिए आप सिंगल कोट में लिखेंगे या विदाउट एनी पंक्चुएशन लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको डबल कोट्स में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू लिख दिया। तो बस अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एस, मैं यहाँ पे जाऊँगी। देखिए मेरा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना हो गया है। तो मुझे क्या करना था, मुझे बस इसको एक स्टाइलिंग ऐड करनी थी। तो ये देखो ये ब्लू में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को अपने ब्लू किया था, कलर को ब्लू लिखा था। ये पहले ब्लैक कलर में शो होता, अब ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का। उसके बाद है मेरे पास और प्रॉपर्टीज, जो कि है एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स। तो हम कैसे एडिशन एंड डिलीशन करते हैं एलिमेंट का,
तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज आई हैव मेंशन दैट आर दोज आर document dot create element, document dot remove child, document dot append child, document dot replace child. Now what are these child? तो child क्या है? Basically what I have explained you earlier that our DOM is basically a tree which has its object. तो वो objects जो है basically वो tree के क्या है? Child है. ऊपर चलते हैं, एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट की स्केलेटन है. ये कोई ट्री है. मेरा स्टार्टिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट हो रहा है HTML टैग के साथ. उसके बाद HTML टैग में व्हाट आई एम राइटिंग, हेड टैग एंड बॉडी टैग. सो बेसिकली दिस हेड टैग एंड बॉडी टैग इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ HTML एलिमेंट. दिस HTML टैग ये रूट एलिमेंट है और ये मेरे चाइल्ड एलिमेंट है. और उसके बाद हेड के बाद भी, हेड के अंदर भी हम चाइल्ड लिख रहे हैं, कुछ टैग्स लिख रहे हैं, एलिमेंट लिख रहे हैं. दोज आर दिस दैट इज माई टाइटल. फिर ये टाइटल क्या हो जाएगा, हेड का चाइल्ड हो जाएगा. टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मेरे टाइटल के चाइल्ड हो जाएगा. उसके बाद हम बॉडी टैग लिख रहे हैं. बॉडी टैग में व्हाट एलिमेंट्स आर वी आर मेंशनिंग, आवर एंकर टैग एंड हेड टैग. एंड दिस बोथ आर नथिंग बट द चाइल्ड ऑफ अवर बॉडी टैग. ओके, चाइल्ड्स ऑफ अवर बॉडी टैग. तो ये कुछ नहीं, बस एक बॉडी टैग के हमारी चाइल्ड है. तो इनको हम चाइल्ड्स कहते हैं. ओके, तो ये तो अगर मुझे इन्हीं, अब सपोज यही मेरे पास एंकर टैग था, हेडिंग टैग था, वहाँ पे मेरे पास टाइटल टैग था. नाउ इफ़ आई वांट टू रिमूव चाइल्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं इन प्रॉपर्टी या फिर ऐड करना है, मुझे रिप्लेस करना है चाइल्ड का एलिमेंट, तो इन सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकती हूँ. ये भी एक्सेस हमें डोम देता है कि हम किसी टैग को भी चेंज कर सकते हैं. या तो सपोज अब मुझे एक एलिमेंट, एक चाइल्ड को रिमूव करना है, तो मैं इसमें से ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगी कि हम ये वाली प्रॉपर्टी को कैसे करते हैं. दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड. अगर मुझे किसी चाइल्ड को रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँगी. बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, आप वैसे भी कर सकते हो. लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी टू यू. तो एक काम करते हैं, यहाँ से कमेंट मार देते हैं. ये प्रोग्राम मैं वैसे ही रख रही हूँ आपके लिए, इसलिए इसको कमेंट कर रही हूँ, इरेज नहीं कर रही हूँ मैं. सपोज मैंने यहाँ पे H1 टैग ले लिया. इसके अंदर मैं लिख दिया एलिमेंट. ठीक है, और मैंने एक H2 टैग ले लिया. उसके अंदर मैंने लिख दिया, अगर हम रिमूव मेथड का यूज़ करें तो मैंने लिख देती हूँ रिमूव चाइल्ड. आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इसको, रिमूव चाइल्ड वाली मेथड मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे. उसके बाद मैं क्या करूँगी, सपोज मैं एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिख रही हूँ, और इसको मैं एक आईडी दे देती हूँ, एक्सेस करने के लिए यूज़फुल है. इसको मैंने आईडी दे दी कोई भी, सपोज एलिमेंट इसकी आईडी है. और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखना चाहती हूँ कि एक काम करते हैं, हम एक रिमूव नाम का बटन दबा दें. उस बटन को क्लिक करते ही आपका मतलब बटन को क्लिक करते ही आपका पैराग्राफ जो है वो रिमूव हो जाएगा.
अब वहाँ पे एक इवेंट वाली कंडीशन, एक इवेंट वाली केस भी आती है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी के साथ ही। डोम में जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली, उसको भी आप कैसे हैंडल कर सकते हो ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं तब भी करूँगी, और अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अभी डर की बात नहीं कि ये एलिमेंट, ये इवेंट वगैरह क्या हो रहा है, मैं आपको ये आगे जाके भी आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में। आगे वही टॉपिक है। तो सपोज इस पैराग्राफ में लिख रही हूँ कि प्रेस दी रिमूव बटन टू रिमूव दिस ओल्ड पैराग्राफ। ठीक है, और मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया। अब आपको बटन क्रिएट करना तो आता ही होगा HTML में, बस एक बटन टैग का आपको यूज़ करना होता है। इस बटन टैग को भी यूज़ करना होता है। इसको आईडी देने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि इस पर हमें इतना काम करना है नहीं। और इस पर मैं एक इवेंट लगा दे रही हूँ, ऑन क्लिक इक्वल टू, मैं कोई भी एक फंक्शन बना दे रही हूँ और उस फंक्शन का नाम लिख रही हूँ सपोज रिमूव चाइल्ड। ठीक है, और एक ब्रैकेट ऐसे, और यहाँ पे मैं बटन के ऊपर लिखना चाहती हूँ रिमूव। अब मैंने ये इतना कर लिया। अब मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगी। अब मुझे एक फंक्शन लिखना है। तो आपने पहले सीखा होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे लिखा जाता है, यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने ऊपर क्या लिखा था, रिमूव चाइल्ड। ये गलत हो गया, एक मिनट। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कॉन्स्टेंट ले रही हूँ, एलिमेंट, एलिमेंट नहीं लेते, एलिमेंट 1। और इसको मैं प्रॉपर्टी दे दूंगी अब, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये वाला प्रॉपर्टी ये आ गई यहाँ पे। अब मैं आईडी का अपने नाम दूंगी। आईडी का नाम मेरे पास क्या था, एलिमेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है एलिमेंट डॉट रिमूव, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं इसके बारे में कह रही थी, रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो एलिमेंट डॉट रिमूव, इसको यूज़ कैसे करना होता है, इस तरीके से, एलिमेंट डॉट रिमूव। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट 1 लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे एलिमेंट 1 होगा वैसे, एलिमेंट 1 लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे आईडी मैंने मेंशन कर दी जो मैंने पैराग्राफ टैग को दी थी और जिसको मुझे रिमूव करना है। और यहाँ पे एलिमेंट डॉट रिमूव वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे देखते हैं। देखो, ये ओल्ड एलिमेंट रिमूव चाइल्ड, ये तो बस मैंने ऐसे ही प्रिंट करवा दिया है H1 टैग H2 टैग में। अब इस बटन को मैं प्रेस करूंगी, उसी टाइम मेरा ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है, प्रेस द रिमूव बटन टू रिमूव दिस ओल्ड पैरा, ये रिमूव हो जाना चाहिए। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, कुछ तो भी एरर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मैंने इस प्रोग्राम में किया क्या है, मैंने एक H1 टैग लिखा है जिसमें मैंने ओल्ड एलिमेंट लिखा है, H2 टैग लिखा है जिसमें मैंने रिमूव चाइल्ड मेथड, ये बस मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया है, इसमें कुछ है नहीं। मेन बात शुरू होती है मेरे पैराग्राफ टैग से। एक मैंने पैराग्राफ टैग लिया जिसमें मैंने लिखा है प्रेस द रिमूव बटन टू रिमूव दिस ओल्ड पैरा। उसके बाद मैंने उसको आईडी दी है एलिमेंट, याद रखना। और अगर आप जब जिस समय आप आईडी दे रहे हो यहाँ पे कोई स्पेस मत छोड़ना, क्योंकि वो भी आपके आईडी में काउंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे भी अपना लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे स्पेस देनी होगी, तभी वो एक्सेस हो पाएगा, नहीं तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपको वो एरर थ्रो करेगा और आप समझ में नहीं पाएगा कि आपका एरर आ क्या रहा है। आप देखोगे कि आपने सब कुछ सही लिखा है, पर आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस देने के कारण आपका जो एलिमेंट है वो गड़बड़ कर सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है, हमेशा याद रखना कि ये अंदर ठीक से ही आप लिखना चाहिए।
क्योंकि वो भी आईडी में ही काउंट होता है। अगर आप स्पेस दे रहे हो तो आपकी स्पेस जो होगी वो आईडी में काउंट होगी, इसलिए स्पेस मत देना, नहीं तो एरर थ्रो करेगा आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने गलती कहाँ की है। तो इस आईडी के अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिया है। तो उसके बाद मैंने एक बटन बनाया जिसके ऊपर मैंने रिमूव लिख दिया है। उस बटन में चाहती हूँ कि उस बटन पे क्लिक करते ही मेरा क्या हो कि ये जो पैराग्राफ टैग है वो मेरा रिमूव हो जाएगा, जो भी मेरा लिखा हुआ आ रहा है। प्रेस द रिमूव बटन टू रिमूव दिस ओल्ड पैरा, ये मुझे रिमूव करना है, इस बटन को प्रेस करके वो रिमूव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इवेंट का यूज़ किया है बेसिकली। ऑन क्लिक ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि दो इवेंट्स में आती है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बेसिकली इवेंट की स्टेट बदल सकते हो। मतलब क्या है, यहाँ आपने पहले सीखा होगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने बस एक रिमूव चाइल्ड का फंक्शन लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ किया है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है कि मुझे किस आईडी में मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है और इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। जी हाँ, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकती हूँ। तो कांस्टेंट एलिमेंट 1 को मैंने बोल दिया है कि ये भाई मेरा एक एलिमेंट है, जो आईडी जिसका नाम एलिमेंट है, उस आईडी को, उस टैग को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, मैंने यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग द आईडी। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया है, एलिमेंट 1 डॉट रिमूव। अब एलिमेंट 1 में मेरा क्या स्टोर है, ये जो आईडी है पैराग्राफ टैग वाला, ये जो पैराग्राफ टैग है बेसिकली ये मेरा किसी वेरिएबल एलिमेंट 1 में स्टोर है, और इसी एलिमेंट 1 को मुझे रिमूव करना है। तो मैं बस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी एलिमेंट 1 डॉट रिमूव, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये सिंटैक्स का पार्ट है। एलिमेंट 1 डॉट रिमूव को मैंने यूज़ कर दिया, और यहाँ पे बस मैंने अब रन कर दिया अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं जब रिमूव बटन प्रेस करूँगी तो ये मेरा रिमूव हो जाएगा, देखिए आप रिमूव हो गया। तो ये बहुत इजी वाली प्रॉपर्टी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और सिमिलरली आपके जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी वैसे की वैसी है। अब क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, आपको इस चीज़ से एक आइडिया आ रही होगी कि क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, आपका एक न्यू टैग क्रिएट करके देगा, आपको एक न्यू कंटेंट क्रिएट करके देगा। अगर मुझे न्यू पैराग्राफ टैग क्रिएट करना है तो बस मैं उस पैराग्राफ टैग को क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, और बस ये वाली प्रॉपर्टी मैं अपनी यूज़ कर दूँगी। उसके बाद रिमूव वाली प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली। अप एंड चाइल्ड में क्या है, अब अप एंड चाइल्ड और आप सोच रहे हो कि क्रिएट एलिमेंट में क्या ही डिफरेंस है, इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। अप एंड चाइल्ड में भी आप एक HTML एलिमेंट को ऐड कर रहे हो बेसिकली, और यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड न्यू और ओल्ड। रिप्लेस चाइल्ड में क्या करना है कि आपको सपोज उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ रिप्लेस करना है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, और आपको ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करना होगा कि आपको कौन से एलिमेंट को किस एलिमेंट से रिप्लेस करना है। तो बेसिकली पहले मैं अपना न्यू एलिमेंट लिखूंगी, उसके बाद मेरा जो ओल्ड एलिमेंट है जिसको मुझे रिप्लेस करना है वो वाला एलिमेंट लिखूंगी, और मेरा रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कुछ डोम हमें बेसिकली फैसिलिटीज़ देता है, ऑफर करता है कि हम एलिमेंट जो है या फिर चाइल्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ है डोम की। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय CSS सिलेक्टर्स। अब इस मेथड का क्या यूज़ है, अब लिखा क्या है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल HTML एलिमेंट्स दैट मैचेस द स्पेसिफिक CSS सिलेक्टर। CSS सिलेक्टर मतलब क्या, कि आईडी हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, टाइप्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली SRC वगैरह जो होता है हम लिखते हैं इमेज टैग के टाइम वगैरह, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि होते हैं CSS सिलेक्टर्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज कर सकते हैं मतलब कैसे, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड। अब एक क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड वर्क कैसे करती है, मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, ये प्रोग्राम के थ्रू समझता है। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ये प्रोग्राम को मैं कमेंट कर रही हूँ, रिमूव नहीं कर रही हूँ आपके लिए। फिर से लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं किस मेथड का यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड के बारे में हम बात करें। क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्वेरी सिलेक्टर मेथड मेरी क्या करने की कोशिश करता है। सपोज आपने एक टैग लिया पैराग्राफ, आपने उस टैग को 3 बार यूज़ किया आपने एचटीएमएल प्रोग्राम में। अब मेरे पास 3 बार पैराग्राफ टैग का यूज़ है, तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, क्वेरी सिलेक्टर मेरा क्या करेगा, उन सारे टैग्स को क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। जितने भी अपना एलिमेंट है आपके, जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट आपने लिखे हुए, उन सारे पैराग्राफ एलिमेंट को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। सपोज आपने उन पैराग्राफ टैग को कोई भी आपने ये नहीं दिया है, कोई आपने आईडी नहीं दी है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट। कोई आपने आईडी प्रोवाइड नहीं किया। आप जब आईडी प्रोवाइड नहीं करते हो तब आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट में चेंज कैसे कर सकते हो, ये आपको शो करेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड। तो अब इस मेथड का यूज़ कैसे करना है। सपोज मैं एक पैराग्राफ टैग लिख रही हूँ, पहला पैराग्राफ टैग लिख रही हूँ, उसमें मैं लिखूँगी दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट वी वांट टू रिमूव। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट वी वांट टू रिमूव। अब फिर से मैं पैराग्राफ टैग लिख रही हूँ, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। और इसके बाद मैं फिर से लिखूँगी दिस इज द थर्ड एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी सिलेक्टर मेथड को यूज़ करना है, तो मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगी। ये सब चीज़ें आपको स्क्रिप्ट में लिखनी होती है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। आप इसको एचटीएमएल प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, तो स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखना। स्क्रिप्ट टैग होता ही जेवीएस के लिए। तो सपोज मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कुछ भी कांस्टेंट रिमूव पी, रिमूव पी नाम का मैंने कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी। अब मैं इस मेथड का यूज़ करूँगी, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। देखिए ये मेथड आ भी गई यहाँ पे, और मुझे बस अपना टैग सिलेक्ट करना है। ये हमेशा याद रखना, डबल कोट्स में ही लिखना है आपको। यहाँ पे टैग मैंने पैराग्राफ वाला यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मुझे अब इसको रिमूव करना है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिखूँगी, आपको समझना चाहिए। ये पहली बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं, अब मेरे पास पैराग्राफ टैग है, वो मेरे पास 3 टैग है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, इन तीनों टैग को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। पर व्हाट इफ़ आई वांट टू चेंज ओनली दिस लाइन, तो इस लाइन को मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो आप बोलेंगे भाई इस पैराग्राफ टैग को आप कोई सा भी आईडी प्रोवाइड कर देते, और इस आईडी के बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इसको इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से इसको मैं चेंज कर सकती थी। पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसको क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड से करना है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड क्या करेगा, मेरे तीनों के तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा। पर अगर मुझे पहले वाले पैराग्राफ में जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट वी वांट टू रिमूव, या रिमूव या फिर वांट टू चेंज, चेंज क्या कर, चेंज बोल दी थी यहाँ पे, रिमूव नहीं, वी वांट टू चेंज। तो यहाँ पे मैं बस क्या लिख दूंगी, अब मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड का यूज़ कर लिया, पैराग्राफ टैग तीनों के तीनों सिलेक्ट हो गए। अब मुझे किसी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मैंने जो अपना कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम लिखा था वो यहाँ पे लिख दूंगी, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दूंगी। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 0 लिखा है, ये मुझे क्या इंडिकेट करता है, पहला टैग। हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती तो ये मेरा दूसरा वाला पैराग्राफ टैग था जो था, दैट इज़ दिस इज़ द सेकेंड एलिमेंट, तो ये वाला चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ तो मेरा पहला वाला चेंज होगा। अगर मैं वहाँ पे 2 लिखती तो मेरा तीसरा वाला पैराग्राफ टैग जो है वो चेंज हो जाता। तो हमेशा याद रखना कि नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो 0 से ही स्टार्ट होगी। 0 मतलब आपका पहला टैग होगा,
0 मतलब आपका पहला पैराग्राफ टैग होगा। आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे 100 पैराग्राफ टैग भी लिख दीजिए, 100 में से आपको 99 वाला पैराग्राफ टैग को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे 99 लिख दीजिए। हमेशा याद रखिए, लेकिन नंबरिंग जो शुरू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो आपको वहाँ पे 99 नहीं, आपको वहाँ पे लिखना होगा। समझ रहे हो आप? 99 0 से स्टार्ट होगी, तो आपको यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना होगा। तो 0 मतलब मेरा पहला पैराग्राफ टैग होगा, और इसको अब मैं चेंज करना चाहती हूँ। इसकी सपोज मैं चेंज करना चाहती हूँ भाई स्टाइल, तो मुझे पता है मैं स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती हूँ। प्रॉपर्टी मुझे सपोज चेंज करनी, उसका कलर मैं लिख दूंगी ब्लू। ये मैंने लिख दिया है। तो अब वेब पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है असल में। देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अब यहाँ पे मैंने क्वेरी सिलेक्ट रोल वाली मेथड को यूज़ करना था। अब यहाँ पे पैराग्राफ, आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ टैग 3 थे, तो तीनों में चेंज क्यों नहीं आया? तीनों में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पहला वाला पैराग्राफ टैग अपना चूज़ किया था। चूज़ कैसे किया है मैंने? ये लिखने की एक्चुअली एक मेथड होती है, आपको सीखनी होगी कि आपको अगर पहले वाला चाइल्ड सिलेक्ट करना है, तो पहले वाला चाइल्ड सिलेक्ट करने के लिए आपको उस वेरिएबल का नाम, जो मैंने यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया है, जिसमें मैंने स्टोर कर रखे थे ये सब कुछ वैल्यूज़, उसको डिक्लेयर करके मुझे यहाँ पे बस स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख देना है, तो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ टैग एक्सेस कर लेगा। और सपोज उसकी मुझे स्टाइल चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, जो मैंने पिछली बार ही एक्सप्लेन की। तो ये स्टाइल डॉट कलर मुझे चेंज करना था, उसको ब्लू कलर करना था, तो इसलिए ये अब ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। सो नाउ आई विल स्टार्ट जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। अब जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है कि आपने बहुत सारे तरीके के फॉर्म्स देखे होंगे बहुत सारी वेबसाइट पे, जैसे कि लॉगिन फॉर्म होता है, तो उस पर कुछ फील्ड्स होती है, जैसे कि आपको आपका नेम एंटर करना होता है, देन आपका मेल एंटर करना होता है, या फिर आपको फ़ोन नंबर एंटर करना होता है। और कुछ फील्ड ऐसे भी होती है कि जो आपको मैंडेटरी होती है टू गिव योर इन्फॉर्मेशन। ऐसे फील्ड्स को हम रिक्वायर्ड फील्ड बोलते हैं। मतलब ऐसे फील्ड में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो बेसिकली हमें फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें वो रिक्वायर्ड फील्ड को जो चाहिए वो देना होगा, तभी फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो इसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म वैलिडेशन बस यही तक नहीं है, फॉर्म वैलिडेशन में कुछ और चीज़ें भी आती है। जैसे बेसिकली अगर आपका फॉर्म आपसे आपका फ़ोन नंबर मांग रहा हो एंड यू आर एंटरिंग देयर स्ट्रिंग, तो ये तो गलत होगा। तो फॉर्म को ये भी समझना चाहिए कि वॉट एवर यू आर एंटरिंग इन योर फॉर्म शुड बी वैलिड फील्ड। तो बेसिकली अगर आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है और एंड यू आर एंटरिंग अ स्ट्रिंग, सपोज योर नेम, सो इट शुड बी अनवैलिड। तो आपको फॉर्म अलर्ट भेजेगा दैट the field you have entered is wrong. So the information that you have entered in your field is wrong. तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है, वेब ब्राउजर्स के में भी इंपॉर्टेंट होता है लॉगिन फॉर्म में, ताकि कोई गलत इंफॉर्मेशन आप सबमिट ना करें। तो इस चीज़ को ही हम फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है, लेट्स सी। HTML form validation can be done by JavaScript. If a form field is empty, then function alerts a message and returns false to prevent the form from being submitted. Basically वही है जो मैंने अभी बोला कि suppose you have entered and suppose you're not entering any kind of information in the required field, then form will obviously, then the function that you have made for validation will obviously send an alert message or will return a false value, so that you will get to know that your so that web browser will get to know that your whatever you have entered in the required field is wrong, or maybe you haven't entered any data. So to prevent this we uses the JavaScript form validation. So form validation में क्या क्या होता है, और बेसिकली इफ़ एनी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब आपने गूगल फॉर्म देखा होगा, गूगल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कुछ फील्ड रिक्वायर्ड होती है, उसमें जो भी फील्ड रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे एक एस्टेरिस्क, एक स्टार मार्क होता है, उस फील्ड को हम रिक्वायर्ड फील्ड बोलते हैं। आप जब तक रिक्वायर्ड फील्ड में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट है जिसके कारण आप अपना फॉर्म सबमिट होने से रोक सकते हैं। एंड देन कैन यूज एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज डोम इवेंट्स। डोम इवेंट्स में बेसिकली ऑन सबमिट इवेंट या फिर ऑन क्लिक, जो भी आप इवेंट्स यूज़ करना चाहो वो करेंगे। इवेंट्स बेसिकली आगे आएगा, यू विल गेट टू नो अबाउट द इवेंट्स, इसका अगला वाला टॉपिक। देन let's talk about HTML. Then HTML form validation can be done automatically by the browser. हाँ, HTML एक होता है कि ब्राउज़र उतना बेसिकली लिमिटेड नहीं है, इसीलिए ब्राउज़र भी अपने आप की तरफ से भी वैलिडेशन परफॉर्म कर सकता है। पर लेकिन हम हमारी तरफ से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट टू प्रिवेंट सच फॉर्म फ्रॉम बीइंग सबमिटेड। तो लेट्स सी इन द VS कोड, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ, form.html। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल मैंने बोला था Ctrl+Shift+1 के बाद आपको एक बॉयलर प्लेट प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाएगा बना बनाया। उसके अंदर आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ, फॉर्म वैलिडेशन। उसके बाद अब हम किस टाइप का फॉर्म बना रहे हैं, बेसिकली सपोज मैं एक फॉर्म भी बोल सकते हैं, फिर सपोज एक वैलिडेशन के लिए मैं एक फील्ड बना रही हूँ जिसमें यू हैव टू एंटर numbers between 1 to 10. Now numbers between 1 to 10 means numbers, not integers. Integers between 1 to 10. So I am making a field where you have to enter the numbers between 1 to 10. So how we are, and if you entered any wrong number, suppose you entered any double, then if suppose you have entered the number that is out from this range 1 to 10, so it will show you an alert message that you have entered a wrong data. तो यही बेसिकली करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, यही इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे करेंगे हम इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग दिखाऊंगी, आई होप सो आपको समझ गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे वेब ब्राउज़र में बेसिकली कोड लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी एंड वेब ब्राउज़र पे भी दिख ही जाएगा। सो प्लीज़ पुट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। तो ये मेरी लाइन होगी, टैग लाइन होगी, जो कि मांग रहा है मुझसे इनपुट टू एंटर द इनपुट बिटवीन 1 to 10। और मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग बना रही हूँ जिसको मैं आईडी दे रही हूँ input 1। या फिर मैं बोलती हूँ इंटीजर, आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू, कुछ भी दे सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। देन मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगी, इनपुट फील्ड में ही आई एम मेकिंग द बटन। टाइप बटन, बटन यहाँ पे एक इनपुट टाइप की तरह काम कर रहा है। उसके बाद मैं उस पर एक इवेंट लगा दूंगी ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया है और मैंने सपोज जो मुझे इंटीजर एंटर करने वाला 1 to 10 वाला, जो मेरा चेक करेगा फंक्शन कि मैंने फील्ड पे वैलिड डेटा एंटर किया है कि नहीं, उस वाले फंक्शन को मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज उस वाले फंक्शन का नाम हम लिखते हैं इंटीजर 1 to 10।
सपोज ये मेरा फंक्शन का नेम है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बटन पे सबमिट और बटन को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है बेसिकली, उसको मैंने आईडी दिया इंटीजर। उसके बाद उसके बगल में उसके नेबर में एक बटन बनाया मैंने, जिस पे मैंने एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक। इसके बारे में यू विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इवेंट्स को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं टोम में। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए, फॉर्म पे ध्यान देते हैं। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग बना देती हूँ, आईडी उसको दे देती हूँ मैं। शो नाम से कुछ भी आप दे सकते हो, बेसिकली आईडी। ये मैं क्यों बना रही हूँ, ये पैराग्राफ टैग मैंने क्यों बनाया, जल्दी पता चल जाएगा। अभी हम फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन लिखना है तो वो मुझे किसके अंदर लिखना होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। बहुत बढ़िया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे अपना। हमेशा याद रखना, फंक्शन लिख रहे हो, क्लास ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, फंक्शन वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, चाहे इसमें। सो फंक्शन, मैंने अपने फंक्शन का नाम क्या लिखा था, इंटीजर 1 to 10। इंटीजर 1 to 10 कर्ली ब्रैकेट्स, हो गया मेरा फंक्शन। अब सपोज मैं एक लेट कर रही हूँ वेरिएबल, लेट ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं किसकी आईडी देने वाली हूँ यहाँ पे, अब मुझे कौन सी वाली फील्ड चाहिए, कौन सी वाली लाइन चाहिए, कौन सी वाली लाइन चाहिए जो मैं दैट आई वांट टू स्टोर इन माय वेरिएबल ए। सो नाउ मुझे आईडी चाहिए इंटीजर, इनपुट वाली, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो मैं इनपुट डाल रही हूँ वही मुझे चेक करना होगा कि वैलिड है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए मुझे उसकी आईडी यहाँ पे देनी होगी। ये लाइन मैंने सिलेक्ट की है तो उसकी आईडी मुझे देनी होगी, डॉट वैल्यू। नाउ मुझे इनपुट में जो मैंने एंटर किया है उसकी वैल्यू को मुझे पकड़ना है। तो क्या करूँगी, बेसिकली मैं इनपुट की जो आईडी है वो मेंशन करूँगी, और उस आईडी में मुझे क्या चाहिए, उसकी वैल्यू, जो इनपुट में मैंने वैल्यू की थी वो डॉट वैल्यू, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना होगा, डॉट वैल्यू। इससे मैं क्या एक्सेस कर पाऊंगी, जो वैल्यू मैंने डाली है अपने इनपुट फील्ड में वो उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगी, उसको मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगी, चेंज कर पाऊंगी। ठीक है। तो एक और वेरिएबल अज्यूम करते हैं, लेट टेक्स्ट। मैंने एक वेरिएबल लिया है। अब मुझे क्या देनी होगी भाई, कंडीशन देनी होगी। अब मैं कंडीशन कौन सी दूंगी, मेरे को कंडीशन ऐसी बनानी है कि माई इंटीजर नंबर शुड बी बिटवीन द 1 to 10। माई नंबर शुड बी बिटवीन द 1 to 10 मतलब क्या, कि अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था ए। अब ए वेरिएबल मुझे मुझे क्या डिपिक्ट करता है कि इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू दैट यू हैव एंटर्ड इन योर इनपुट फील्ड, राइट। सो माई ए शुड बी ग्रेटर देन 1, माई ए शुड बी ग्रेटर देन 1। और मैं क्या बोलूँगी, और ऑपरेटर आपको पता है कैसे देते हैं, ये 2 लाइन्स है। और मैं क्या बोलूँगी, माई एक्स शुड बी लेस देन 10। एक तो मेरा एक्स 1 से बड़ा, एक्स नहीं ए, एक तो मेरा ए 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर मेरा ए 10 से छोटा होना चाहिए। तो यही मुझे देगा क्या, कि वैल्यूज बिटवीन दिस 1 to 10। उसके बाद अगर अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कर दूंगी, टेक्स्ट मेरा शुड बी इनपुट नॉट वैलिड, इनपुट इज वैलिड, सॉरी, ऐसा बोलूंगी।
नहीं तो इल्स क्या बोल दूंगी मैं। आई होप आपने इफ इल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा, इस सेशन में ऑलरेडी वो हो चुका है, तो आपने अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इफ इल्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं। इल्स मुझे क्या होगा, तो बोलना होगा कि इनपुट इज इनवैलिड। अगर मेरा नंबर इज आउट ऑफ रेंज, इज आउट ऑफ रेंज, दैट इज रेंज क्या थी 1 to 10, इफ माई नंबर इज आउट ऑफ रेंज, सो I will send this alert that input is not valid. सिंपल है, राइट। सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस टेक्स्ट वेयर, इन दिस पैराग्राफ। मैंने आपको बोला था कि इस पैराग्राफ को मैं क्यों लिख रही हूँ, इसी के लिए क्योंकि मुझे ये टेक्स्ट जो है वो उसमें प्रिंट करना है। तो हमने ऑलरेडी मेथड सीख चुकी है कि इफ आई वांट टू चेंज द कंटेंट ऑफ एनी एलिमेंट, आई विल यूज द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी, डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी क्या थी वो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है पैराग्राफ टैग की मेरे, शो, ठीक है। उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल कब यूज करते हैं हम, जब हमें चेंज करना होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर का कंटेंट। सो आई विल यूज देयर ए डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी, ये सॉरी ये ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया, मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब जो भी मतलब बेसिकली क्या होगा, ये वाला फंक्शन है वो चेक करेगा कि मैंने इंटीजर कौन से डाले मेरे इनपुट फील्ड के अंदर, विद द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसका इनपुट था इंटीजर, डॉट वैल्यू इट विल एक्सेस द वैल्यू दैट आई हैव एंटर्ड इन माय इनपुट फील्ड। देन एज्यूमिंग लेट टेक्स्ट, देन मैंने कंडीशन लिख दी है वो द फॉर द रेंज। अगर मेरे इंटीजर जो है वो रेंज के बाहर हुआ, सो आई विल प्रिंट इनपुट इज नॉट वैलिड। इफ इट इज अंडर माई रेंज, दैट इज, तो मैं प्रिंट करूँगी इनपुट इज वैलिड। देन उसके बाद नाउ आई वॉन्ट टू शोकेस दिस टेक्स्ट इन माई पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में मैं कैसे लाऊंगी उसको, सिंपल सी बात है, इफ आई वॉन्ट टू चेंज द कंटेंट of any element, I will use the dot inner HTML property. So I will place text here, there. Okay, so ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 2 बार आ गया हेड एंड बॉडी। ओके, बॉडी टैग है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो कंट्रोल एस, अब देखते हैं, अब वेट, राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो ये देखो मेरे पास एक क्यूट सा छोटा सा एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड बन के आया है, और उसके बगल में सबमिट बटन है, सबमिट हो गया है वो, ठीक है। So if I'm entering 2, submit, input is valid. But suppose if I'm entering the number greater than 10, suppose 11, and if I'm submitting it, it won't be working again. Okay, 11, input is valid. Why the hell input is valid? Wait, यहाँ पे I have to use the AND statement, ampersand. Now it's correct, I guess.
If I'm entering in submit input is not valid. Okay, so the error is resolved. So in this way you can do the form validation, and this is the small example for the form validation. In this way you can implement many examples by yourself. So the next topic there is data validation. So data validation मतलब वही होता है कि whatever data you are entering in the required field should be valid. If it is invalid, it will send you the alert message that your data is invalid. So I have to correct on basis of that. Data validation is the process of ensuring that user input is clean, correct, and useful. Then there are two types of data validation, that is server side validation and client side validation. So now, first of all, do you know what is the difference between server and browser? There is a slight difference between server and browser. So let's figure out that first. Basically, a web browser is a software application that allows user to view web pages, while a web server is a software program that provides web pages to user. So my HTML program, my JavaScript program is basically my server. And what is my web browser? The interface, the web page that you are working on, right? Basically, the software application that you are working on is your web browser. So, what is server side validation? Server side validation means it is performed by a web server after input has been sent to the server. सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है? सर्वर साइड वैलिडेशन ये होता है कि आपने अगर कोई इनपुट डाला है फील्ड में, तो पहले वेब सर्वर बेसिकली सर्वर पहले आपने जो सर्वर में सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है कि बेसिकली आपने इनपुट फील्ड में कोई डेटा डाला, तो वो डेटा आप सर्वर को सेंड होगा सबमिट करने के बाद, और उसके बाद वेब सर्वर फिर देखेगा कि डेटा सही है या नहीं। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है कि पहले आप इनपुट डालेंगे, तो वो वेब सर्वर को सेंड होने से पहले वेब ब्राउज़र चेक करेगा कि क्या आपने सही डेटा डाला है, फिर वो डेटा वेब सर्वर को सेंड होगा। तो सर्वर साइड में क्या होता है कि आप डेटा डालते हैं, वो आप डेटा सबमिट करने के बाद डेटा डायरेक्टली सेंड होता है सर्वर को, और उसके बाद वेब सर्वर उसके रिक्वायर्ड एक्शन लेगा। पर क्लाइंट साइड रिलेशन में क्या होता है कि आप डेटा को डाल रहे हो, तो वो डेटा डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाएगा, पहले वेब ब्राउज़र उसको वैलिडेट करेगा, फिर वो जाएगा वेब सर्वर के पास। तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज डोम इवेंट्स। डोम इवेंट्स जिसको मैंने दो जगह पे पहले यूज़ किया था, तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं कि डोम इवेंट्स क्या होता है। अब डोम इवेंट्स में जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं। अब बेसिकली तुम कोई फॉर्म देखोगे या फिर कोई वेब पेज देखोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बटन्स, और उन बटन्स को क्लिक करने के बाद यू कैन गेट यू विल बी नेविगेटेड टू अनदर वेब ब्राउज़र, या फिर यू विल गेट नेविगेटेड टू अनदर वेबसाइट, या फिर कुछ लोड होगा, कुछ अनलोड होगा, राइट? इफ यू आर टेकिंग योर माउस ऑन सम बटन्स, तो बटन्स विल रिएक्ट, राइट? उसके बाद सपोज यू आर क्लिकिंग एन इमेज एंड एंड वो लोड हो रही है, देन उसका वेब पेज पे क्लिक कर रहे हो तो वेब पेज लोड हो रहा है। ब्राउजर पे आप कोई सर्च हिस्ट्री कर रहे हो तो वो भी आपको सर्चिंग आपकी दिखा रहा है कि हिस्ट्री आपकी लोड कर रहा है, राइट? देन आप माउस से कोई कुछ क्लिक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर इवेंट्स, राइट? You are clicking the mouse, your web page is loading, then your image has loaded, then your HTML form got submitted. तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है, एक इवेंट्स है। नाउ दिस इवेंट्स आर चेंजिंग देयर स्टेट्स बेसिकली, राइट? When you are submitting your form, you are getting navigated to some another website,
या फिर यू आर गेटिंग एन मैसेज, अ मैसेज लाइक योर फॉर्म इज सबमिटेड, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, सबमिट करने के बाद आप किसी अदर वेबसाइट वेब पेज पे जा रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली एक इवेंट है। अब जो भी कोई आपकी फॉर्म की स्टेट बदल रही है, आपकी वेब ब्राउज़र की स्टेट बदल रही है, यू कैन कॉल दिस एज एन HTML इवेंट्स। तो इस इवेंट्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, वी कैन हैंडल दिस इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको ये भी एक्सेस देता है कि आप ये इंटरनल काम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सको। तो इस इंटरनल काम को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेथड्स होती है बेसिकली इवेंट्स की भी। मैंने आपको एक मेथड ऊपर बताई थी, दैट इज़ ऑन क्लिक। मैं ऑन क्लिक मेथड को यूज़ कर रही थी। ऑन क्लिक मतलब क्या, उस द वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द इट्स मीनिंग। ऑन क्लिक में क्या होता है कि सपोज यू आर क्लिकिंग एनी बटन, या सपोज यू आर क्लिकिंग एनी टेक्स्ट, so that text or that button will navigate you to another website, another web page, and will show you another message, will send you an alert, will send you any pop-up. So basically what are those things, these things are nothing but the events. And how to handle those events, with the help of on click method. HTML DOM allows you to assign events to HTML elements using JavaScript. That what we have discussed. Then let's get an example about, let's talk about an example of on click event. So VS Code में चलते हैं और ऑन क्लिक के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसी प्रोग्राम पे अगर देखेंगे, जो फॉर्म वैलिडेशन का हमने प्रोग्राम किया था, इस छोटे से प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे तो मैंने एक फंक्शन बनाया था, बेसिकली एक इंटीजर का फंक्शन बनाया था, विच विल चेक द रेंज ऑफ द इनपुट दैट आई हैव इनपुटेड द बेसिकली इन माई टेक्स्ट फील्ड। जो भी मैंने इनपुट दिया था उसको चेक करेगा मेरा ये वाला फंक्शन। दिस फंक्शन विल वैलिडेट माई फॉर्म। दिस फंक्शन विल check the details that I have inputted in my input text field, right? If I'm entering the number that is out of the range from 1 to 10, so it will send me an alert message that your input is not valid. And if my input is valid, if the number lies between 1 to 10, then it will show me the input is valid. That's what we have studied in the form validation. Correct, the input should be correct, useful, and neat, clean. Okay. So now, what is the case of on click? What is the role of on click in this thing? When you want to access any kind of function, if you're accessing any kind of function with the help of button, right? सो बटन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन, टू चेंज द इवेंट स्टेट, टू चेंज द इवेंट स्टेट ऑफ व्हाट, ऑफ माय वेब पेज, वी विल यूज हियर द ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट एक मेथड होती है बेसिकली डोम इवेंट्स की, जिसकी मदद से आप इवेंट की स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया था। बटन पे मैंने क्या लिख दिया कि ऑन क्लिक इक्वल टू, मैंने फंक्शन का जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, उस बटन के प्रेस होने के बाद जो एग्जीक्यूट होना चाहिए उस फंक्शन का मैंने नेम लिखा है, और मैंने बस बटन पे सबमिट लिख दिया और ये लिख दिया। वेब पेज में मैंने खोला, यहाँ पे एक सबमिट बटन है, उसको क्लिक करके ही मेरा फॉर्म वैलिडेशन का काम हो जाएगा। इसको मैं अगर कुछ भी नंबर डालूँ 12, तो सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद मुझे शो हो रहा है कि इनपुट इज़ नॉट वैलिड। तो ये क्या कर रहा है, ये वेब पेज बेसिकली अपनी इवेंट की स्टेट बदल रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। आफ्टर एंटरिंग द इनपुट एंड आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन, you are able to see this text that is input is not valid, input is valid. So basically what it's doing, it's just simply changing a state. So this is what we call event, right? तो यही इवेंट है। तो इसको हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, ऑन क्लिक के बटन हेल्प से। अब बटन क्लिकेबल है ये तो पता है, पर बटन क्लिक होने के बाद कुछ होना भी तो चाहिए। जो भी होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन क्लिक इवेंट। ओके, then there are many more methods in HTML events also. Basically अभी तक fundamentals के लिए on click event में बहुत useful है, but there are other methods also. Those are onload and on unload events.
ऑनलोड एंड ऑन अनलोड इवेंट्स आर ट्रिगर्ड व्हेन द यूजर एंटर्स और लीव्स द पेज। जब यूजर बेसिकली पेज पे एंटर कर रहा है तो ऑनलोड, अब ऑब्वियसली आप किसी वेब पेज पे एंटर कर रहे हो तो आपका वेब पेज क्या होता है, लोड होता है। ऑन लोड मतलब क्या होगा, वेब पेज लोड होने के बाद, वेब पेज लोड होने पर, ठीक है। और ऑन अनलोड क्या होगा कि व्हेन यू वांट टू लीव द पेज, तो आफ्टर दैट, तो आफ्टर वाली केस है वो ऑन अनलोड इवेंट्स में होंगी। उसके बाद on or load event can be used to check visitor browser type, browser version, and load the proper version of the web page based on information. So whatever browser you are using, you can check the browser type, browser version, or you can load the proper version of the web page also with the help with the help of onload event. Okay, these both are used to deal with cookies. तो ये होते हैं जावास्क्रिप्ट डोम के इवेंट्स, और सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वही है ऑन क्लिक इवेंट। आप ऑन सबमिट भी यूज़ कर सकते हो, ओके, बट ऑन क्लिक को हमेशा आपको याद रखना है कि यूज़ कैसे होगा। आप वो किसी टेक्स्ट पे भी इफ़ यू वांट टू यूज़ देन यू कैन, ओके, you can use this on text also. Okay, so this is for today. और ये था जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स जो आपने ज़रूर से करना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड these are the very basic things that you should know about JavaScript. सो एक कंक्लूजन, एक रिव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। जावास्क्रिप्ट डोम में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने पढ़ा कि HTML डोम हमारा एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है बेसिकली वेब डॉक्यूमेंट का, ओके, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, नोड बोलते हैं, राइट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोड, डॉक्यूमेंट नोड, एलिमेंट नोड्स, एट्रीब्यूट नोड, टेक्स्ट नोड्स। उसके बाद डोम मेथड्स हमने डिस्कस करी है, प्रॉपर्टीज हमने जो इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करी। उसके बाद एडिंग एंड डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट्स भी हमने डिस्कस किया है। हमने इसमें इनर HTML प्रॉपर्टी और वैल्यू वाली भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द इनपुट टेक्स्ट फील्ड, सो हाउ यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी। उसके बाद एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स भी हमने देखा जिसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड को हमने रिमूव, चाइल्ड क्या है, एक एलिमेंट ही है, उस एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने CSS सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल की भी मदद ली। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, इट विल सिलेक्ट ऑल द टैग्स that you have mentioned. Suppose you have specifically mentioned the paragraph tag, so there are many paragraph tag you have used in your HTML program. It will select all those paragraph tags together, and जब तुम mention करोगे जब तुम mention करोगे, if you don't want to mention your ID, तुमने उन पैराग्राफ टैग को कोई आईडी नहीं दी है, बट यू वांट टू मेंशन कि मुझे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में चेंजेस करवाने हैं, तो वो भी कैसे करवाने हैं वो भी हमने डिस्कस किया। हमने क्या करना होता है, वहाँ पे ब्रैकेट में 0 रखना होता है। अब नंबरिंग जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 इंडिकेट्स योर फर्स्ट पैराग्राफ टैग। There are suppose 4 paragraph tag, so the numbering will start from 0 and it will be like 0 1 2 3, okay, 3 तक जाएगा because there are 4 paragraphs and counting should be 4, ओके। देन हमने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में सीखा कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड के साथ कैसे डील करते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे होता है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया मैंने इंटीजर का 1 to 10 में रखने का। उसके बाद डोम इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया कि डोम इवेंट्स होते क्या है, और ऑन क्लिक के मेथड के हेल्प से तुम कैसे डोम इवेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी के लिए तुम्हारे पास ऑन क्लिक मेथड इज़ वेरी रियली सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू नो। उसके बाद यू कैन गो फॉर ऑन लोड इवेंट्स एंड मेनी मोर इवेंट्स, यू कैन स्टडी अबाउट दैम ऑनलाइन और बहुत जगह पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. I'm leaving, signing off. Thank you.